Hello friends, welcome back to my channel Students Guide by SZ. Today I'll explain you the questions and answer of chapter Topi Shukla from grade 10. So, let's seize the day. Question number 1. इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? कहानी means story. महत्वपूर्ण means important. हिस्सा means part or aspect. किस तरह से है? How he is. If we will see the complete meaning of the question, then it is, how is Ifan important in Topi Shukla's story? Now the answer. इफ़न और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे. मीन्स इफ़न एंड टोपी शुक्ला वेर बेस्ट फ्रेंड. एक दूसरे के बिना अधूरे थे. मीन्स दे वेर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी. दे स्टिल लॉन्ग्ड फॉर समवन्स लव. इफ़न तो अपने मन की बात दादी को या टोपी को कहकर हल्का कर लेता था. इफ़न यूज्ड टू डिस्ट्रेस बाय टॉकिंग टू टोपी और हिज ग्रैंडमदर. परंतु टोपी के लिए इफ़न और उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था. बट फॉर टोपी देयर वॉज नो वन एक्सेप्ट इफ़न एंड इफ़न्स ग्रैंडमदर. अतः इफ़न वास्तव में टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है. Therefore, Ifan is important part of the Topi story. Now we will go to the next question. इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? पीहर means mother's house or maternal house. जाना चाहती थी, wanted to go. So the complete meaning is, why did Iffan's grandmother want to go to her mother's house, maternal house? Now the answer. इफ़न की दादी मौलवी की बेटी ना होकर ज़मींदार की बेटी थी. Means Iffan's grandmother was not from the Muslim scholar family, but she was from landlord family. वो वहाँ दूध घी दही खाती थी. Means there she used to eat and drink दूध, that is milk, ghee, that is clarified butter, dahi, that is yogurt. She used to eat all this there. लखनऊ आकर वह उसके लिए तरस गई. However, she craved for those things after coming to Lucknow, that is in-laws family. यहाँ मौलविन बनकर रहना पड़ता था. Means she has to live life frugally. Means whatever the income is there, she had to use it wisely. इसलिए उन्हें पीहर जाना अच्छा लगता था. That's the reason she wanted to go to her mother's house. Now next question. Question number 3. इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? इफ़न की दादी, that is grandmothers of Iffan's grandmother, and गाना बजाना, that is singing and dancing. इच्छा means desire. पूरी क्यों नहीं कर पाई? Why she was not able to? If we see the complete meaning, why couldn't Iffan's grandmother fulfill her desire to sing and dance at her son's wedding? Now the answer. दादी का विवाह मौलवी परिवार में हुआ था. Means Iffan's grandmother was married to a Muslim scholar family, जहाँ गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था. Means where singing and dancing were considered against the rule of Islam. इसलिए बेचारी दिल महसूस कर रह गई.
That's the reason she suppressed her desire. अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अम्मी. Ammi word is used in Urdu language to address mother. शब्द word टोपी के घर वालों means Topi's family. Pratikriya means reaction. So if we see the complete meaning, what was the reaction of Topi's family when he used Ammi word to address his mother? Now the answer. अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नज़रें टोपी पर पड़ गई. After hearing the word Ammi from Topi, every family member started staring at Topi. क्योंकि ये उर्दू का शब्द था. This word was from Urdu language and Topi Hindu था. That is, Topi was Hindu. इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी. After hearing this word from Topi, they thought their customs, traditions were being contaminated. घर में सभी हैरान थे. Everybody was shocked. माँ ने डांटा, दादी गरजी और टोपी की जमकर पिटाई हुई. Mother started scolding him. दादी grandmother got angry and टोपी की जमकर पिटाई हुई. Topi was beaten by his mother. Now we will go to the next question. Number 5. 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? 10 अक्टूबर that is 10th October सन 45 the year 1945 दिन the day टोपी के जीवन में means in the life of टोपी क्या महत्व रखता है? What is the important or significance? So let's see the complete meaning. What was the significance of 10th October 1945 in Topi's life? Now the answer. 10 अक्टूबर सन 45 को इफ़न के पिता का तबादला हो गया और वे चले गए. Means on 10th October 1945, Iffin's father got transferred and they shifted to other place. अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ. After his best friend left, he was very sad. उसने कसम खाई कि वो कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाएगा जिसकी बदली हो जाती है. He promised himself to never be a friend of a person whose father has a transferable job. एक तो इफ़न की दादी जिसे वह बहुत प्यार करता था वो नहीं रही. Firstly, Iffin's grandmother passed away, to whom he used to love. Then, फिर इफ़न चला गया. Then, इफ़न shifted to some other place. ये दिन उसके लिए महत्वपूर्ण दिन बन गया. That's the reason 10th October 1945 became the most important day in the life of Topi. Question number 6. टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? दादी means grandmother. बदलने that is to exchange. बात क्यों कही? Why he said. So the complete meaning is, why did Topi ask Iffen to exchange their grandmother? Now the answer. Iffen की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी. Iffen's grandmother used to love टोपी. उनकी मीठी मीठी बोली उसे तिल के लड्डू या शक्कर गुड़ जैसी लगती थी. Her words were sweet as sesame laddu or sugar और जैगरी. टोपी की माँ भी ऐसा ही बोलती थी. Even Topi's mother also speak in the same way. परंतु उसकी दादी उसे बोलने नहीं देती थी.
her grandmother never allowed her to speak. उधर इफ़न के दादाजी व अम्मी को उनकी बोली पसंद नहीं थी. So, grandfather of Iffin's grandfather and Iffin's mother didn't like the Iffin's grandmother's way of talking. अथा इफ़न की दादी और टोपी की माँ दोनों एक स्वर की महिलाएं थी. Iffin's mother and Topi's mother and Iffin's grandmother had the same tone of voice. यही सोचकर टोपी ने दादी बदलने की बात की. After considering this point, Topi asked to exchange their grandmothers. Question number 7. पूरे घर में इफ़न को अपने दादी से विशेष स्नेह क्यों था? दादी means grandmother. विशेष स्नेह means special love or the love the most. Now see the complete meaning. Why did Iffen love his grandmother the most in the family? Now the answer. Iffen की दादी उसे बहुत प्यार करती थी. Iffen's grandmother used to love him. हर तरह से उसकी सहायता करती थी. Iffen's grandmother always supported him. उसके अब्बू अम्मी उसे डांटते थे. While his parents used to scold him. उसकी बाजी और नुज़हत भी उसे परेशान करती थी. Means his elder sister and younger sister, that is Baji and Nuzhat, used to trouble him. दादी उसको रात में अनार परी, बहराम डाकू, अमीर हमला, गुलाब काबली, हातिम ताई जैसे अनेक कहानियाँ सुनाती थी. Sometimes she used to tell him stories at night. These are the names of stories. अनार परी, बहराम डाकू, अमीर हमला, हातिम ताई. इस कारण वह अपनी दादी से प्यार करता था. These are the reason why he loved her the most. Next question. Question number 8. इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? देहांत, that is death or demise. खाली सा means empty. Complete meaning is, after the demise of Iffin's grandmother, why did Topi feel the house has become empty? इफ़न की दादी जितना प्यार इफ़न को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी. Iffin's grandmother used to love Topi as much as she loved Iffen. टोपी से अपनत्व रखती थी. She used to consider Topi as a part of the family. उसे भी कहानियाँ सुनाती थी. उसकी माँ का हालचाल पूछती थी. She used to tell stories and ask him about his mother. उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया खत्म हो गई हो. After the Dadi's demise, Topi longed for her love and care. इसलिए टोपी को इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली सा लगा. That's the reason. After the demise of Iffin's grandmother, Topi felt the house has become empty. Question number 9. टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मज़हब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे. इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए. Means टोपी and इफ़न की दादी means Topi and Iffin's grandmother. अलग अलग मज़हब from different religion. जाति means caste. एक अनजान अटूट रिश्ता unbreakable relationship. Kathan means this saying.
आलोक means regarding. अपने विचार लिखिए. Write your opinion. If we see the complete meaning, then Topi and Iffin's grandmother belonged to different religion and caste, yet they were bound with unbreakable relationship. Write your opinion regarding this. And now the answer. टोपी हिंदू धर्म का था. टोपी वॉज हिंदू. और इफ़न की दादी मुस्लिम एंड इफ़न्स ग्रैंडमदर वॉज मुस्लिम. परंतु जब भी टोपी इफ़न के घर जाता, दादी के पास ही बैठता. Whenever Topi goes to Iffin's house, he sat near Iffin's grandmother. उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी. He used to like her native language, that is पूर्वी. दादी पहले अम्मा का हाल पूछती. दादी उसे रोज़ कुछ ना कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था. She used to ask him about his mother and give something to eat, but Topi never ate it. फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की डाली सा लगता. He feels her spoken words as sweet as sugar or jaggery. इसलिए उनका रिश्ता अटूट था. That's the reason they were bound with unbreakable relationship. Now we will go to the next question. Question number 10. टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया. बताइए. 9वीं कक्षा means 9th grade. 2 बार means twice. Fail हो गया means had failed. So the complete meaning is Topi failed twice in 9th grade. Explain. Okay, so but this question has 3 parts. If this question comes in exam, they will not ask you directly. They will mix and match. That is, they will combine 1 and 2 or 2 and 3 or maybe 3 and 1. Okay, this is applied question, means you have to understand the question, the meaning of question, and write accordingly. So let me explain you the first part. Okay, the first part of the question, that is क. ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ज़हीन means intelligent, बावजूद means despite, कक्षा means class, 2 बार that is twice, fail होना that is mean failed, he failed, कारण reason. So if we see the complete meaning, despite of being intelligent, he failed twice, and we have to give the reason here. So now the answer. टोपी बहुत ज़हीन बुद्धिमान था, परंतु 2 बार फेल हो गया, क्योंकि पहली बार जब भी वो पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवाती जो नौकर से नहीं मंगवाई जा सकती. Means what? He was very good in studies, but no one allowed him to concentrate on studies. That is why he failed, because either his elder brother or his mother, Ram Dulari, his mother used to send him to buy something from outside which servant could not get it. So this was the first reason. The next, दूसरे साल उसे मियादी बुखार हो गया था और पेपर नहीं दे पाया, इसलिए फेल हो गया था. Next time he failed because he had typhoid. Okay, so he was not able to give the exams. That is the reason he failed the next year also. Now the next part. Next part means ख, that is part B we can say. एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कक्षा क्लास 2 बार means twice,
किन भावनात्मक means psychological, चुनौतियाँ means challenges, सामना means faced. If we see the complete meaning, what were the psychological challenges Topi faced after attending the same class for 2 years? पहली बार एक कक्षा छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ा. Means the first psychological challenge was he was having no friends. First year he had to attend the class with students 1 year younger to him. दूसरी साल 7वीं के बच्चों के साथ बैठना पड़ा. The second year he had to attend the class with student 2 years younger to him. इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था. That's the reason he was having no friend. अध्यापक भी बच्चों को ना पढ़ने के कारण फेल होने का उदाहरण टोपी का नाम लेकर देते थे. उसका मजाक उड़ाते थे. Teacher started giving his examples to other students to work hard and make fun of him. मास्टर जी उसे नोटिस नहीं करते थे. उससे कोई उत्तर नहीं पूछते बल्कि कहते कि अगले साल पूछ लेंगे या कहते इतने सालों में तो आ गया होगा. Teacher started avoiding him. They didn't ask him any question. They used to say, "Till now you must be knowing all the answer." इस तरह सभी उसे भावनात्मक रूप से आहत करते थे. This way everyone hurt him emotionally. फिर अंत में इन चुनौतियों को स्वीकार कर उसने सफलता प्राप्त की. Then also he faced all the challenges and passed in the 3rd year. Next question, and this will be the last. As I told you, the last question. No, this is not the last question, but the last part of the 10th question. टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए. Now we will see the word meaning. भावात्मक, that is emotional. परेशानियाँ, that is difficulties. मद्देनज़र, considering. शिक्षा व्यवस्था, that is education system. बदलाव, changes. सुझाइए means suggest. If we see the complete meaning of the question, considering the emotional difficulties suggests some change in education system. Now the answer. बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से आहत होते हैं और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है. When they fail, children get emotionally hurt and they become mentally imbalanced. वे शर्म महसूस करते हैं. They feel ashamed due to failure. इसके लिए विद्यार्थियों को पुस्तकी ज्ञान ना रख परखा जाए बल्कि उनके अनुभव और अन्य कार्यकुशलताओं को देखकर उसे प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है. Means they should not judge only the book knowledge or the memory power of student, but other thing. They should also encourage other things, other activities and their abilities. So there should be some modification in education system. And now the last question, question number 11. Okay, this is the last question, means question number 11. इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? इफ़न की दादी, that is Iffin's grandmother. मायके means mother's house or maternal house. Custodian means under the control of government. क्यों चला गया? Now if we see the complete meaning, why Iffin's grandmother's house went into custodian? Now the answer. कस्टोडियन पर जाना अर्थात सरकारी कब्जा होना.
Going under custodian means control by government. दादी के पीहर वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा. When all the relatives of Iffin's grandmother went to Pakistan, there was no one to take care of their house. इस पर मालिकाना हक भी ना रहा. They didn't have the ownership right of that house. इसलिए वो घर सरकारी कब्जे में चला गया. That's the reason the house went into the custodian. This was the end of the question and answer. I hope this video was helpful to you. Please like, share and subscribe my channel. Click the bell icon for my new update. Best of luck for your exam. Take care. Bye.